Hello everyone, welcome back to my channel Aviation Concepts by Om. I am Gautam, a trainee pilot. So guys, today I welcome you in this lecture of DME. Today we'll cover this topic completely, including your theory and your important questions. There are approximately 15-20 questions which I have selected from different books. And trust me guys, उन क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे या उनके जैसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? नॉट मतलब उससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है? First, we'll read the theory, we'll understand the topic, what is DME, principle of operation, and all the things about DME. And then we'll end in the end, we'll discuss about the DME. So if you are good with your concept of DME, so you can practice the questions as well in the end. So you can skip this part if you are confident enough. Only then you can skip this part if you are confident enough in this topic of DME, so that you can practice questions as well. Okay. And don't worry about this PDF. You will find this PDF in the description of this video only. Okay. So देखो, टॉपिक बहुत सिंपल है, थियोरिटिकल है और चीज़ें बहुत सिंपल है यार, ठीक है? आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग, यू आर लाइक यार ये हर वीडियो में यही बोलता है कि टॉपिक बहुत सिंपल है। भाई ट्रस्ट मी यार, टॉपिक्स बहुत सिंपल है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक यार, डीएमई. It says distance measuring equipment. Now related to distance, now what is distance? And this is something which I want, ठीक है? So I want range, I want my aircraft distance from a particular ground station. So that will be provided by this equipment or NAVAID known as your DME. Okay. And this DME also works on secondary radar principle. And we know secondary radar principle works on the pulse technique. So this DME also works on the pulse technique only. And in the secondary radar system, there's an interrogator and transponder. So it also works in the same way. There's an interrogator and a transponder. We'll see that how that interrogator transponder works. So it says DME is a secondary radar system that enables an aircraft to establish its range from a ground station. Fine. Now a pilot obtains a bearing. देखो bearing we have discussed. Bearing मिलती है VOR से. Distance in the distance is given in the form of slant range. It gives you slant range. Remember this thing. DME gives you the slant range. ठीक है. So this slant range will be given by DME. So guys, in the most of the cases, the VOR and DME are actually co-located to each other. It is not compulsory, but generally it is co-located to each other. Okay. There is only one frequency of VOR and DME both. So if you tune that frequency, your VOR, you will get the bearing and you will get the range as well. So it is known as something by a term known as rho theta. Rho theta. Okay. Rho is for range, R is for rho and R is for range. So rho is for range and theta is for obviously something related to angle, so it is bearing. And it also obeys the line of sight range. ठीक है, we'll see कि ये कौन सी frequency band में आता है. देखो, the frequency for DME is 962 to 1213 megahertz in some books, and in some books it is 960 to 1215 megahertz, which is very close. Nothing big much difference. So it is in UHF band and its emission code is Papa 0 November. So remember this thing as well कि UHF band है, emission code is Papa 0 November. Now how it works? देखो, there's always a difference of 63 megahertz between interrogation and transponder frequency. We'll see the reason as well कि why there's a difference of 63 megahertz. Suppose let's take an example. Okay, so let's take an example for making the calculation. Suppose my interrogator is interrogating the transponder at a frequency of 1000 megahertz. Now that transponder will reply to that interrogation by adding or subtracting 63 megahertz from this. So in this case, let it be 1063 megahertz. It may be subtracted as well. Okay, but you need to keep that thing in mind that it should not be less than 962. Okay, so 1063 megahertz will be your transponding frequency. Okay, there's always a difference. Now, why is the difference? Let's talk about it now only, because to avoid something known as self-triggering. To avoid self-triggering, देखो, suppose there's a radar for ground station and there's a radar in an aircraft. Okay, now if any interrogation comes from the aircraft to the ground station, now ground station is transponding. So the
difference is because that it should not be self-triggered in its own replies. Suppose the ground station is replying to that particular aircraft, so it should not be get confused or it should not get repeated reply of its own. Understood? कि वो अपने आप अपने आंसर में कंफ्यूज ना हो जाए, दैट्स इट. ठीक है. So this is why we do the difference of 63 megahertz, ठीक है, to avoid the self triggering. ठीक है. And yeah, this is how its area looks like on the ground. This is a viewer. ठीक है, this is a viewer and this is a DME area. This one is a DME area. Okay. So यार बहुत सिंपल सी चीज थी. Now there is a NAVAID known as TACAN and this is a military based NAVAID. TACAN stands for tactical. देखो, tactical air navigation. Tactical air navigation. ठीक है. It is a military NAVAID. For military aircrafts, it provides both bearing and range. But for our commercial purpose, it provides only the range, not bearing, to our commercial aircrafts. Military NAVAID, which gives both bearing and range to suitable equipped aircraft, similar to co-located viewer and DME. Civil aircraft will get only range element of TACAN, not bearing element. ठीक है. Remember this thing. TACAN से civil aircraft को सिर्फ distance मिलता है, not bearing. Okay. Now, how this DME works? There's a principle of operation for that. Again, we know that it works on a secondary radar principle. अब secondary radar काम कैसे करता है? Secondary radar काम करता है आपका interrogation and transponding पे. ठीक है. Now, in this case, again, इसमें देखो, it says DME is a secondary radar and also uses pulse technique. The aircraft's interrogator. In this case, the aircraft is interrogator. देखो, there's a aircraft. Now you tune the frequency, okay, of a viewer, co-located viewer and DME. Let's take only the case of DME. ठीक है. So if it's tune the frequency, now the pulses are being transmitted in all directions from this aircraft. Pulses are being transmitted, but the frequency is tuned for a particular ground station only. So अब देखो हो क्या रहा है. Aircraft interrogator transmits a series of omnidirectional pulses on carrier frequency of ground transponder. अब देखो, now this aircraft assume like it कि यहाँ पर एक ground station है. There's a particular ground station here. Okay, let it be किशनगढ़. ठीक है. आई डोंट नो भाई वहां पर ये फैसिलिटी है या नहीं है. आई गेस होगी, पता नहीं यार मुझे. लेट इट बी किशनगढ़. ओके. सो देखो बहुत सिंपल चीज है वैसे. दिस इज द इकाउ कोड. ओके. देयर्स अ 3 लेटर कोड होता है एक पर्टिकुलर व्यूअर और पर्टिकुलर डीएमई का. सो लेट इट बी किशनगढ़. ठीक है. नाउ योर एयरक्राफ्ट इज हियर. इफ यू ट्यून द फ्रीक्वेंसी ऑफ किशनगढ़, नाउ व्हाट विल हैपन? द एयरक्राफ्ट radar starts searching. It goes in your range search mode. Now in this mode, what happens? In this mode, this radar is transmitting pulse at a rate of 150 pulse paired per second. In this rate, it is transmitting at a rate of 150 pulses paired per second. And ground station replies. Now अब ग्राउंड स्टेशन को पता पड़ जाएगा. अब कैसे पता पड़ेगा? विल सी दैट. ग्राउंड स्टेशन रिप्लाई कैसे करता है? ग्राउंड स्टेशन कुछ भी नहीं, जिस फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिशन आ रहे हैं उसमें प्लस माइनस 63 करके सेंड इट्स रिप्लाईज देयर अगेन टू द एयरक्राफ्ट. ठीक है. बाय अब देखो 63 मेगाहर्ट्ज का क्यों किया? टू रिमूव द सेल्फ ट्रिगरिंग. नाउ एयरक्राफ्ट का जो रिसीवर है, अब देखो फॉर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी देयर्स अ पर्टिकुलर पीआरएफ. ठीक है. PRF is a pulse recurrence frequency. Now suppose for now assume it is a timing. ठीक है. I know, suppose I am the aircraft and I have tuned the frequency of Kishangarh. So I know there's a difference of let's take an analogy. Let's take an analogy that there's a difference of 3 seconds. So 3 second का difference मुझे जहां से मिल रहा है and aircraft का receiver इतना smart है, जो मैंने frequency tune करी है उसको उसका difference पता है. The aircraft radar knows the PRF of that. So now there is something, if it matches in the range search mode, now if the timing matches, if the PRF matches, if the random PRF matches of the aircraft to that station, in that case lock on happened. उस केस में एक चीज होती है उसको बोलते हैं हम लॉक ऑन. तो उस केस में आपका लॉक ऑन अचीव हो जाता है. So now your lock on is achieved.
So if the lock on is achieved, now in this case, your the pulses are transmitting at a rate of 150 pulses per second in the case of range search mode. Now the situation changes. Now you are in lock-on mode. In the case of lock-on mode, it transmits at a rate of 27 pulses per second. देखो उसने क्या किया, assume it like that कि यार देखो एयरक्राफ्ट है ना, पहले जान लगा दी, बहुत जान लगा रहा है एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट ढूंढ रहा है कि भाई स्टेशन का है। अब स्टेशन मिल गया एंड नाउ यू हैव अचीव्ड द लॉक ऑन। सो उसने बोला ठीक है भाई स्टेशन मिल गया, पल्सेस को थोड़ा कम कर देते हैं। सो नाउ द लॉक ऑन इज अचीव्ड। If the lock on is achieved, now it will transmit continuously at a rate of 27 pulses paired per seconds. ठीक है। अगर मान लो लॉक ऑन अचीव नहीं हुआ, देखो सर्च मोड में हमने बहुत बहुत ढूंढा, ठीक है, सर्च मोड में बहुत ढूंढा, नाउ लॉक ऑन इज नॉट अचीव, अब लॉक ऑन अचीव नहीं हो पा रहा यार, अब लॉक ऑन अचीव नहीं हो पा रहा, तो क्या करें? नाउ द एयरक्राफ्ट के पास देखो, एयरक्राफ्ट अज्यूम इट लाइक दैट कि एयरक्राफ्ट अपनी उतनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा। एयरक्राफ्ट कहेगा ओके वी आर सर्चिंग नाउ आल्सो, बट लेट्स रिड्यूस दैट 150 to 60। सो इन द केस इफ लॉक ऑन इज नॉट अचीव, देखो लॉक ऑन अगर अचीव नहीं हुआ, सो इन दैट केस इट इज ट्रांसमिटिंग एट अ रेट ऑफ 60 पल्सेस पेयर्ड पर सेकेंड्स। ठीक है, एंड दिस 150 वाली चीज होती है आपकी फॉर 100 सेकेंड्स, रिमेंबर दिस थिंग, ये 100 सेकेंड्स के लिए होती है। ठीक है, सो अंडरस्टूड। सबसे पहले देखो, एक है एयरक्राफ्ट, एक है ग्राउंड स्टेशन। एयरक्राफ्ट क्या कर रहा है इस केस में? इंट्रोगेशन कर रहा है, वो ढूंढ रहा है कि वेयर इज द स्टेशन, वेयर इज द स्टेशन, एट अ फुल स्पीड के साथ ढूंढ रहा है एट अ रेट ऑफ 150 पल्सेस पर सेकेंड्स। ठीक है, नाउ सपोज द लॉक ऑन गेट्स अचीव्ड, ठीक है, उसको स्टेशन मिल गया, नाउ लॉक ऑन इज अचीव्ड, सो दैट रेट विल रिड्यूस टू 27 पल्सेस पर सेकेंड्स। इफ द केस, इन द केस अगर मान लो लॉक ऑन अचीव नहीं हुआ, या aircraft is unable to find its viewer station, its DME station or viewer station, so in that case it will reduce its pulses to 60 pulses per seconds। समझ आ गया? सब क्लियर हो गया ना? सो यार दिस इज द थिंग। सो अब देखो, अब एक चीज होती है यार, एक इसका ड्रॉबैक तो नहीं बोलूंगा मैं, इसका एक ध्यान रखने वाली चीज है कि ग्राउंड स्टेशन कैन ओनली रिप्लाई टू 2700 pulses per second। ठीक है, सो ग्राउंड स्टेशन कैन रिप्लाई टू मैक्स ऑफ 2700 pulses per second। सो सपोज यार देखो, डेटा कैलकुलेशन वेरी सिंपल, सो आई नो अगर सारे मान लो 27 pulses per second is my rate for lock on, so only I can say that if I do this calculation, so only 100 aircrafts at a particular time is can use its facility। ना अब क्या होगा भाई, मान लो कोई एयरक्राफ्ट थोड़ा दूर है एंड इट्स सिग्नल्स आर वेरी वीक, सो इन दैट केस दिस DME will remove that the aircraft which is getting weaker connections। अगर वो 100 से एक्सीड होता है तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा। सपोज देयर आर 105 एयरक्राफ्ट्स, ठीक है, एंड यू आर द 101th, ठीक है, अब क्या होगा? But you are very close to the station, so you are close to the station, so your signals are very strong। so एक था फर्स्ट एयरक्राफ्ट और वो आप हो 101th एयरक्राफ्ट, so the first aircraft is very far from a ground station, so this DME will cancel its position and it enables you in this top 100 list। so that's how this works, and this process of removing the weak signals or the further signals is known as swamping। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्वैम्पिंग बोलते हैं। नाउ यार एक चीज है कि यार व्हाई वी नीड टू कोलोकेट द VOR एंड DME, अलग अलग से भी तो काम चल सकता है? नो, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉकपिट वर्कलोड ऑफ अ पायलट। वर्कलोड यार हमेशा ही बोला जाता है, पायलट का वर्कलोड जितना जितना कम होता है उतना बेनिफिशियल होता है। सो दिस इज ड्यू टू रिड्यूस द कॉकपिट वर्कलोड। ओके, DME ट्रांसमिशंस ओबे लाइन ऑफ साइट रूल। ठीक है, देखो लाइन ऑफ साइट क्या होता है? 1.25 हाइट ऑफ ट्रांसमीटर प्लस हाइट ऑफ रिसीवर। ठीक है, सो जितना ज़्यादा ये होगा उतना ज़्यादा मेरा रेंज मिलेगा। ठीक है,
सो जितनी ज़्यादा रिसीवर की हाइट होगी उतनी ज़्यादा मेरे को रेंज मिलेगी. सो फॉर सपोज देयर आर क्वेश्चंस इन एग्जाम कि मैक्सिमम रेंज कैसे निकालें हम. फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम रेंज यू नीड टू यूज द लाइन ऑफ साइट फॉर्मूला. सो 1.25 रूट ऑफ हाइट ऑफ ट्रांसमीटर प्लस रूट ऑफ हाइट ऑफ रिसीवर. दिस इज वी हैव कवर्ड ऑलरेडी यार, ठीक है, तो कुछ नई बात नहीं है. नाउ इट इज समथिंग रिटन एज रेंज एक्यूरेसी. अब देखो रेंज की एक्यूरेसी जो आपकी स्लांट रेंज विच यू आर गेटिंग, इट शुड बी एक्यूरेट टू प्लस माइनस 0.25 नॉटिकल माइल और प्लस माइनस 1.25% ऑफ रेंज, ठीक है. नाउ द मैक्सिमम रेंज फॉर्मूला इज दिस, वी हैव कवर्ड दैट. नाउ देयर इज अ एरर known as a slant range error. This is a very nice thing यार. अब देखो स्लांट रेंज और ग्राउंड डिस्टेंस में कुछ फर्क होता है, ठीक है. नाउ व्हाट इज अ स्लांट रेंज? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, suppose this is the station and you are here. So this distance is your slant range and this is your ground distance. Now the difference between this and this will get bigger when you are getting close and higher to the station. जब आप स्टेशन के पास आ रहे हो तभी एरर बढ़ता है. जस्ट एक बात याद रखना यार, जस्ट ओवरहेड द DME facility, just overhead the beacon, or you are circling around the beacon. So in that case, your slant range will be displayed as the height of the aircraft. In that case, your slant range will be displayed as the height of the aircraft. So when an aircraft is directly over DME, it reads aircraft height in terms of nautical mile, ठीक है, क्योंकि वो nautical mile में देगा, but that is actually the height of the aircraft, ठीक है. अब देखो एक ग्राउंड स्पीड की भी चीज होती है जो आपको DME फैसिलिटी दे देती है by calculating the difference between the change of range, ठीक है. rate of change of range से आप फाइंड कर लेते हो ग्राउंड स्पीड. मेक सेंस, ठीक है. The airborne DME equipment calculates aircraft ground speed, but when you are circling around the DME beacon at that time, the ground speed shown by this DME equipment is 0, ठीक है. अंडरस्टूड. नाउ यार एक ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, मेमोरी सर्किट. सपोज if your signal is lost, ठीक है, if your DME signal is not lost completely, now for 10 seconds you will get a frozen display. जो पुराना डेटा था वही आपको देखने को मिलेगा. After that 10 seconds, now your aircraft's radar again goes into the search mode, range search mode में आपका एयरक्राफ्ट दोबारा चला जाएगा, ठीक है. नाउ देखो DME और ILS भी आपके कोलोकेटेड होते हैं, ठीक है. ILS में भी मेनली मार्कर बीकन्स, ठीक है. सो इट इज कोलोकेटेड विद ILS ग्लाइड स्लोप इक्विपमेंट एंड शो 0 फॉर ILS थ्रेशोल्ड, ठीक है. यार ये मेजर कर रहा है, एक तरह से ये कह रहा है कि हम मेजर कर रहे हैं थ्रेशोल्ड से, एट द थ्रेशोल्ड और डिस्टेंस इज 0, ठीक है. इंडिकेशन ऑफ ILS DME is correct in direction of approach only. It works in the direction of approach only. Okay, not in the सब like ILS जैसे वर्क करता है वैसे नहीं करता. But indication of ILS DME is correct in the direction of approach only, ठीक है. Frequency pairing with VOR and DME can be frequency paired only if both of them are co-located and serving the same station, ठीक है. VOR और DME तभी आप co-locate कर सकते हो जब they are both working, they are both giving serving to the same station, ठीक है. Can still be paired if they are located within 7 nautical mile of each other. It is also possible if the two if the VOR and DME beacons are 7 nautical miles to each other, then also it is possible to co-locate them. Then also possible to be their frequency paired. अगर वो 7 nautical mile दूर हैं तब भी आप उनकी frequency pair कर सकते हो. Now in that case, at the end letter Z will be written, ठीक है. At the end आपका Z letter लिखा हुआ होगा. DME and viewer to have same ident should be 600 meter from each other. अगर ident आपको same रखना है तो it should be within 600 meter of each other, ठीक है. So यार this is all for the concepts and I really hope that concepts तो बिल्कुल clear हो गए होंगे. Now to test that कि कितने concept clear हुए, there are some questions and these are the important questions यार. So let's do those questions. It says
DME that is difficult obtaining a lock on. Difficulty obtaining a lock on. Okay. उसमें क्या होगा, मान लो lock on achieve नहीं हो पाया, ये पूछ रहा है. Stays in search mode but reduces PRF to maximum 60 pulses per second after 1500 pulses per have been transmitted. Is it true? Yes, it is true. देखो पहले क्या था, पहले उसने सर्च मोड इनेबल किया, सर्च मोड में उसने 150 पल्सेस पेयर पर सेकंड की स्पीड से ट्रांसमिट किया फॉर 100 सेकंड्स. सो इट इज दिस मच, ठीक है. बट नाउ अब लॉक ऑन अचीव नहीं हो पाया, सो इट विल रिड्यूस इट टू 60 pulses per second. For a conventional DME facility, beacon saturation will occur when number of simultaneously interrogations exceed. देखो beacon saturation, जब 100 से ज़्यादा aircrafts are using the same beacon, so in that case beacon saturation will take place. So 100. A letter Z at the end of identification code means, अभी हमने डिस्कस किया था that both are 7 nautical miles to each other. DME and viewer are co-located and serving the same station. DME and viewer are not co-located and देखो co-located तो नहीं है but serving the same station are within 7 nautical miles from each other. So its answer is Charlie. DME 962 to 1213 megahertz, ठीक है. Don't mark this. DME operates in the UHF band में काम करता है in secondary radar system. What is maximum distance viewer and DME TACAN ground station installation if they have to serve Morse code identifier? देखो ident की बात कर रहा है, ident is for 2000 feet or 600 meters, so 600 meter. अगर इसकी जगह ऑप्शन होगा 2000 feet, so that also is correct, ठीक है. A DME in tracking mode subsequently experiences a reduction in signal strength will switch the equipment in the first instance to, देखो reduction हुआ है, so it will go in the memory circuit mode, memory mode कहते हैं. In that case, it is giving the frozen display for 10 seconds and after those 10 seconds, again search mode starts, ठीक है. So memory mode. An aircraft will not accept replies from its own transmission that are reflected from the ground because देखो aircraft will not accept replies from its own transmission. वो खुद की ट्रांसमिशन के रिप्लाईज क्यों नहीं आ रहे उसको? Because the हाँ यहाँ लिखा ना, because the frequencies are different. There's a difference of 63 megahertz. An aircraft DME receiver rejects pulses mean from the other aircraft. देखो अब उसको पता कैसे है, क्योंकि हर एयरक्राफ्ट का एक रैंडम PRF है. So random PRF is unique to each aircraft. Yes, it's true. DME and VOR frequency paired because मैंने बताया था cockpit workload कम करने के लिए. So cockpit workload is reduced. A DME receiver does not lock onto its own transmitter because of, पूछ रहा है कि अपने आप में क्यों नहीं. देखो ये own transmitter वाली लाइन आ गई, मतलब there's a difference of 63 megahertz is due to the reason of this problem only. So transmitter and receiver are working at different frequency. Number of aircraft required to saturate DME beacon are, देखो number of aircraft required to saturate DME beacon is 126, ठीक है, not 100. 100 आपके होते हैं, देखो 126 कैसे हुआ, क्योंकि 126 are enable in the search mode as well. अगर मान लो जरूरी थोड़ी कि सबका सबका लॉक ऑन हो गया हो, मान लो किसी का लॉक ऑन अचीव नहीं हुआ, कुछ एयरक्राफ्ट ऐसे भी होंगे. So in that case 126 it can serve, but maximum it can अच्छा सॉरी यार, it says, मैंने नीचे वाला क्वेश्चन पे जरा ध्यान दे दिया था. Number of aircraft required to saturate DME beacon are, saturate DME beacon is 100 only, ठीक है. Now maximum number of aircraft that can use a DME station is 126. अब now देखो, ये मैंने नोट्स में लिख रखा है ऊपर, शायद हमने पॉइंट मिस कर दिया. अब देखो 100 एयरक्राफ्ट कब होंगे, जब आपके जब सबके सब ने लॉक ऑन अचीव कर लिया, बट इट्स नॉट ट्रू. Sometimes it is also the possibility that some of the aircrafts are still in the search mode. So in that case, it can accommodate maximum. If we case the maximum case, so in that case, it may accommodate 126 aircrafts. An aircraft is flying at a height of 20,000 feet. So 20,000 feet over DME. Over DME station पे वो क्या दिखाता है, वही कि भाई आपको height है उसको nautical miles में दिखा देगा. So 20,000 feet is approximately close to 6 kilometers. So 6 kilometers is the answer. DME operates in UHF band. It transmits twin pulses, ठीक है, and emission is Papa 0 November. So this is the answer. Bravo. An aircraft flying at flight level 250 wishes to interrogate a DME beacon. अब देखो maximum range पूछ रहा है, again use the same formula, root of 25,000. यार this calculation ये आप कर लेना, ठीक है.
and tell me the answer in the comment section. ठीक है. A DME transponder does not respond to pulses received from radars other than DME. क्योंकि देखो हर एयरक्राफ्ट का एक अपना अपना वो होता है random PRF. So each aircraft transmit pulses at random rates. हाँ ठीक है. A VOR DME share the same first two letter and देखो Z वाली बात आ गई. It means they are serving the same station but they are 7 nautical miles to each other और they are 600 मीटर मतलब 2000 फीट वाला सीन है. ठीक है. So they are more than 600 meter and but serve the same location. Serve same कर रहे हैं but they are not co-located. A DME beacon having a transmit frequency of 962 megahertz would have a receive frequency. देखो 962 में आप माइनस तो कर नहीं सकते क्योंकि इससे कम जाओगे तो वो DME की रेंज में ही नहीं आएगा. So you need to add here. So 962 plus 63 will give you 235 and 6612 1025. So 1025 megahertz is the answer. The last question says airborne DME equipment is able to discriminate between pulses intended for itself and pulses intended for other aircraft because aircraft दूसरी pulses जो उसका timing match नहीं करते उनको reject कर देता है. So aircraft reject pulses not synchronized with its own random pulse recurrence rate. This is the answer for this last question. ट्रस्ट मी गाइस हमने बहुत अच्छे से डीएमई पढ़ा है और इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम में आएंगे, इनके जैसे आएंगे. ठीक है. सो शेयर दिस वैल्यूएबल कंटेंट टू योर फ्रेंड्स एंड बी स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल. बाय बाय, टेक केयर. पढ़ाई करो यार, पढ़ लो भाई, एग्जाम में आग लगा दी. ठीक है, चलो बाय बाय.